Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself Ambuja. Today we are going to continue class 9th, one of the most important chapters, number system for mathematics. Here we will see all those numbers and their families regarding to what we have to study in class 9 guys. So first we are going to see the families regarding to number system. First number that we have to study is our natural number. Natural number. What do you mean by natural numbers, or which numbers can be termed as natural numbers? Actually, natural numbers involves all those counting numbers which can be counted. So from 1 to infinity, all those numbers come under, etc. come under natural numbers. Actually, natural numbers is denoted by a special sign which is known as n. Actually guys, most of the students are getting confused on whether 0 can be termed as natural number or no. No, whenever we are adding natural number in, and when we are adding 0 in natural number, then it becomes whole number. So guys, you have to always remember, whenever we are talking about whole number, it includes 0 number. So a major question arises in most of the questions, most of the times when two false questions come guys, most of the students get confused when this question come guys, कि whether natural numbers are whole number, yes or no. Actually, whole numbers can't be natural, but natural numbers are whole numbers. So guys, you have to say whole numbers can't be equal to natural numbers, but sometimes natural numbers can be termed as whole number. Okay guys, so these two topics need to be get clarity. Whole number we discussed, so whole number is denoted by sign W. Now we are going to see about so many numbers are there. We can see prime number, composite number, so many things are there. So let me tell you certain more things. What do you mean by prime number? Next topic, what do you mean by prime number? Actually, prime number means a number which is having one and only one factor, or we can say a number which is get divisible by itself or 1. So that number is termed as prime number. So one, suppose example 1, 3. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि 1 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं. देखो, अब जब भी हम लोग प्राइम नंबर के ऊपर जा रहे हैं, प्राइम नंबर को मैंने पहले बताया कि प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से कटते हैं या उनके 1 से कटते हैं. ठीक है, तो एक तो मैं अभी 3 बताता हूँ, 5 बताता हूँ. 1 के बारे में हम लोग लेटर डिस्कस कर लेते हैं. 3, 5, 7 दीज आर प्राइम नंबर. चलो 1 के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 1 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं. क्लास 8 का स्टूडेंट सोच रहा है कि प्राइम नंबर तो है, क्लास 9 का सोच रहा है हमें तो पढ़ना ही नहीं. देखो, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 को हम लोग प्राइम नंबर में नहीं रखते हैं. क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि 1 का स्टार्टिंग नहीं होता है, तो 1 तो किसी और से कटेगा ही नहीं, कटेगा. तो सिंपल है, तो 1 को छोड़कर अपार्ट फ्रॉम 2 को रख सकते हैं. ठीक है, 2 को हम लोग रख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, या कई बार तो हम लोग बोलते हैं जो बोलना है तो. ठीक है, अब चलो ये तो है, इसमें कोई क्लियरिटी अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो इसे रहने, तो इसे डिक्लेयर कर देता हूँ मैं. लेकिन इतना याद रखो, प्राइम नंबर था दो नंबर विच इज ऑलवेज डिविजिबल itself and 1. चलो एक नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर. को प्राइम एक्चुअली ये प्राइम नंबर विच इज हैविंग the factor as, देखो मैं आपको सिखाता हूँ, 5 and 7 are termed as co-prime. Why? Because these two numbers are having 1 and 5 as their factor, and 7 का क्या है 1 and 7. तो ये दोनों नंबर्स होता है को-प्राइम. को-प्राइम का मतलब क्या होता है कि वैसे प्राइम नंबर जिनका बीच का डिफरेंस 2 होता है. ठीक है, 9, 11, 11, 13 these are termed as को-प्राइम. चलो गाइस, अब को-प्राइम की बात हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर. चलो उससे पहले कुछ कंपोजिट नंबर का मान जान लेते हैं. कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट नंबर? COMPOSITE, कंपोजिट नंबर. यू लिव इट, जस्ट आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म. व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट नंबर? Actually, composite numbers are those numbers which is having much more than 1, 2 or 3 factors. So example, suppose 4 is having factor as 1, 2, 4 itself. So many factors are there for 4. We can say 4 is a composite number. Now next term that we are going to see about rational number, which is our concept in class 9. What do you mean by rational number? Actually, most of the books language पे मत जाना भाई, हमें जो पढ़ना है उसे याद रखना कि rational numbers are those numbers that can be represented in P upon Q where Q can't be, where Q can't be 0. So guys, most of the students को तो ये पता ही नहीं चलता P upon Q होता क्या. Actually, P over here is the numerator and Q is over denominator. So main thing arises where 0 is our rational number or no. Actually, 0 is our rational number. How we can prove it? Let me prove it. Actually, we can write 0 upon 1, the same meaning we get 0. But most of the question arises, most of the students are asking whether minus or we can say negative numbers are real. Wait guys, they are rational or not? Most of the students are asking me from this question because rational numbers में तो आते हैं कि नहीं ये बताइए. Suppose 5 upon 3 minus 5 upon 3 whether it is
rational number or no? Actually, this is a rational number. Why? Because we can represent it in the form of P upon Q, and Q is also having a proper value. I have not told any particular situation that Q there should be no, there should not be negative values. No, like that, no any law apply in a rational number. But in case of a rational number, most of students get confused when we have to represent numbers on the number line, right? But let it be there, because when we will see that, we will try to solve it according to our needs. Now we are going to see about irrational number. Actually, most of the rational numbers are when they are under the form of a square or square root. Suppose under root 4 is equal to 2. Their proper value we get. Actually, whenever we are not getting the proper value, no, they will come under irrational number. Suppose root 3. Root 3 is termed as irrational. Why? Because we are not getting the proper value. The proper value. Even one major question is pi. पाई इज ए रेशनल और इरेशनल. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने इसे शॉर्ट वीडियो में बताया था कि पाई और 22/7 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे इरेशनल में रखते हैं. ठीक है, लेकिन 22/7 एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता है, इसलिए उसे हम रेशनल में रखते हैं. तो पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, इतना जान लो. नाउ वी आर गोइंग टू सी ए बॉट क्लास 9 में. और आपको कुछ पढ़ना नहीं है, देखो जो कुछ पढ़ना है मैं बता देता हूँ. यहाँ पर रेशनल रिलेशन क्लियर हो गया. आपको कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर तो आपको जानने के लिए क्लास 9 में आप जानते ही होंगे. Most of students are known about prime number, odd number, even number, but composite number I told you. Now we are going to see means class 9 का अगला सिलेबस में हमारा क्या था कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन, how we can represent any number on number line. Now guys I am going to tell you, but guys एक चीज और मैं पहले बता दूं. देखो नंबर लाइन को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं. नंबर लाइन को डिवाइड करने से पहले वेट करो गाइस, वेट करो, या वेट गाइस, वेट. ओ एक और जो डाउट आ रहा है, देखो वेट करो. तो गाइस एक देखो डाउट मैंने पहले बताया आपको कोप्राइम के रिलेटेड. कोप्राइम के बारे में मैंने बताया कि वैसा प्राइम नंबर जिसका कि एक फैक्टर रहेगा, दोनों एक ही रहेगा, 1 रहेगा, कोई और रहेगा. चलो तो मैंने एग्जांपल दिया 5 और 7, 7 और 5. तो इसको मैंने बोला 5 और 7 के बीच एक ही रिलेशन है, 5 का भी 1 फैक्टर है, 7 का भी 1 फैक्टर है. लेकिन वो स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन मैंने और दिया 9 और 11. 9 11 तो एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम लोग को प्राइम को ले रहे हैं तो क्या वहां पे एक नंबर को प्राइम होना जरूरी है. देखो ऐसा कोई लॉ नहीं है. आपको हमेशा इतना याद रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट को प्राइम देयर शुड नॉट बी कंसीडर दैट वी हैव टू टेक वन नंबर एज प्राइम नंबर. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. वी कैन आइदर टेक इवन कंपोजिट नंबर आल्सो. सपोज आई एम टेकिंग हियर 5 और 6. 5 और 6 is also a co-prime. Don't worry about it, because in basic classes we are told that only prime numbers can be termed as co-prime. No, it's not actually reality, because whenever you are increasing your classes, means that your classes are being increased, so you have to increase your mentality and you have to try to learn something new concept. Now we are going to see about the representation of numbers on number line. Actually we knew that our number line is divided into two parts. This is our center or base, we can say. O. The right side of the center denotes what? Positive number, and left denotes negative number. We already knew it, but what will happen when we have to represent any number line in the form of rational number? Actually rational number means all numbers can be termed as, leave it guys. Suppose in fraction we are going to represent something 3/5. Someone told us to represent 3/5. Even this question I also explained in class 8 student. देखो एक बहुत one thing that matters in all classes is that number system is common. In class 8 we studied, in class 9 we studied, in class 10 we studied. So most of the students get confused which are the contradicts or which are the topics that we should not study in class 8. Actually in class 8 there was no anything to prove, but in class 9 we are having so many doubts, so many things that we need to prove whether they are rational or irrational. That was the very basic difference between class 8 and 9. So here we are going to represent 3/5. Simply whenever you get any like this number. Actually most students एक trick मैं बताता हूँ अभी. Now I'm going to tell you one method. So first we have to write like that 1 2 dash over, no problem. Up to infinity you can write here 1 -1 -2. Now we can see how we can represent 3/5. Actually most of students are doing one mistake, or they can represent like that also. They are doing like simply 0.6, or yeah 0.6 they are doing like that. And they are making here 1 2 3 4 5 6 7 9 up to 9 and 10 is over 1. So they are directly are doing suppose I'm 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so 1 2 3 4 5 6. So here they can represent
0.6, like that they are doing. But one of the major questions is when we are going to represent, this is also all right, but another term how we can represent, actually we can represent by another method, that is we have to simply draw only 5 lines between the given number. Suppose 3 by 5, we already knew that 3 by 5 lies between 0 and 1, so we can directly do that. So we have to make here 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 5. So simply we can do here 3 by 5, no problem, because this method will help you when we have to represent a mixed fraction. Suppose here given 5 3 upon 8, we have to represent 5 3 upon 8. So how will you represent? In class 8 only I told you guys, because whenever we are getting these all terms, no, apna kuch presence of mind we have to apply over there. How we can solve it? Let me see. First of all, we have to try to write it in a proper or improper. देखो बहुत बार ये confusion, you need to go through your basic classes guys. प्रॉपर improper पता नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन पता नहीं है, कंपोजिट नंबर पता नहीं है, नेचुरल नंबर पता नहीं है, तो क्या होगा बताओ तुम ही. हम कुछ कर सकते हैं? नो, आई कांट डू एनीथिंग गाइस. So first of all, you need to go and try to learn or revise the basic classes, the basic concept that you studied over there. We know that proper fraction are those fractions where? Tell me. Numerator is greater or less? Tell me. I need this question. So guys, हमको ये आंसर चाहिए. मैं भी बताता हूँ कि tell me about proper fraction. Which fractions are termed as proper and which fractions are termed as improper? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा. तो ये देखो हम लोग देख सकते हैं इसे 5 8 40 and 43 upon 8. मैं बता दूंगा अगर आपको नहीं आएगा तो कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है वीडियो के एंड में. तो 43 अपॉन 8 हमारा ये नंबर आ गया. अब इसे रिप्रेजेंट करना है तो मोस्ट स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम आती है. तो सिंपली क्या करो कि 0 और 1 के बीच ये आएगा कि नहीं, ये 5 और 6 के बीच में आएगा. इतना तो पता हो गया हमें कि 5 और 6 के बीच में आएगा. तो चलो इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, here 4 and here 5 and here 6. Then what we have to do over guys? Then we can see here 5 is over, 6 is over. Then what we have to do? You have to follow this process 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 8 line you have to make, and then you have to simply represent 5 3 upon 8. Is it over guys? So guys, we saw how we can represent numbers on the numbers line, but this is not your concept, because in these all things that we have to study in class 8 only. But for basic things, basic knowledge, I told you these all things. Now we are going to see how we can represent rational number on number line, or how we can represent irrational number. We represented here rational number. Now we can see how we can represent irrational number on number line. Suppose we are told to represent √3 on the number line. So let's see how we can represent. So guys, finally we are going to represent √2 on number line. This is very simple guys. Just you have to follow this single process only. First you have to draw a number line like that we are drawing. In order to prevent more, in order to take very less space, you can start from the center only. Suppose this is our center. Here I am writing here 1 2 3. Suppose up to 3 I made, because √2 told no problem. Then we have to mention one thing, is that suppose we are taking here OA. Now let me do what we can do over here. Let's just see what we can do over here. Now guys, we have to follow one thing, is that we have to prove √2 on number line, or we have to represent. In order to represent any rational number, we apply one process, is that we already studied in class 8 about Pythagorean triplet and Pythagoras theorem. That same thing we have to apply over here guys. We have to construct a right angle triangle over here. Okay, is it over? Now most of the students even ask this question also, is it very essential to draw a right angle triangle? Yeah guys, because without right angle triangle you can't mention. You will guess by yourself and you will just draw. No, you will not get the proper mark guys. So first we have to draw a right angle triangle OAB. Now we have to prove √2. Suppose guys, whenever you are told to prove anything, you have to mention only one thing, is guys, that you have to bring that particular number in the hypotenuse. We know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. H square equal to P square plus B square. We already knew it. So we can write here H is equal to under root B square plus P square. Okay. Now let's take, we are taking here OS as 1 in unit. We already knew. The same thing we have to take AB as 1, because we have to find out CB as 2. And we already knew that under root 1 square plus 1 square equal to under root 2 square. अब चलो एक चीज और हमसे पूछा जाए कि अगर 5 आ जाए, 10 आ जाए, 17 आ जाए, 15 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो, और मान लो तुमको दे दिया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, अंडर रूट 11.
अंडर रूट 11 दे दिया, अंडर रूट 11 को रिप्रेजेंट कैसे करें बताओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अब हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अरे तुम्हारा बहुत ही सिंपल है, अगर अंडर रूट 11 करने नहीं आया तो पहले चलो तुम रूट 10 तक निकालो। रूट 10 का क्या होता है देखो, रूट 10 को ऐसे हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है 2√5 आता है कि नहीं। तो पहले यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, आसानी से रूट 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, लेकिन एक चीज हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा इनसाइड नंबर है अगर वह एंड होता है 0 से तो उसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है मैं बता दूंगा। लेकिन अगर सपोज वी आर टोल्ड टू रिप्रेजेंट 5, 11 भी आसान है, अगर 5 समझ लो तो समझ जाओगे। अब 5 है तो हम लोग जानते हैं इससे अगर हम लोग ऐसे करते हैं 2 तो हमें 4 मिलता है। अब देखो अंडर रूट 4 + 4 8, रूट 8 मिलता है। रूट 8 का वैल्यू कितना होता है 2√2 होता है। तो जब भी ऐसे टर्म्स आएंगे ना आपको, जैसे रूट 5 को हमारा दे दिया तो रूट 5 को हम ऐसे लिख देते हैं 1 + √2। अब रूट 2 का वैल्यू कितना है देखो 4 + 5, 4 + 1 हमारा रूट 5 आ गया। तो ऐसे हमें चलना पड़ता है। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से ऐसे एक with the help of compass we have to cut an arc and the arc will make or the arc will represent √2 on the number line। तो ये आपको प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बता दिया। अब आप पे मैटर करता है कि आपको नंबर कितना देगा। बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है यार बड़ा नंबर दे दिया तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, मींस सपोज वी आर टोल्ड टू रिप्रेजेंट √11 √5 all these terms are simple guys, but you have to apply your just common sense over there। Now we are going to see more terms which we have to study in class 8, चलो sorry guys class 9, because so many terms are regarded correlated with class 8। So guys we are going to solve। अब next type का क्वेश्चन क्या आएगा in class 9 you have to study, you have to find some rational numbers between two given numbers guys। This is also very simple, yeah guys, this is also very simple because here also we have to apply just a simple formula and even we can't apply formula also, but then also we can solve guys। Let's start। Here we are told to represent or we have to find sorry a rational number between 5 and 7। When we are told to represent or find a rational number, then there is the trick, you have to simply apply 1 into x plus y, like that we can do here 1 upon 12, so we will get here 6, 5 and 7 is having 6 as their what rational number lying between these two numbers। Suppose we are told to represent 10 numbers, find 10 rational numbers between 5 and 7, then we should not apply this formula because this formula is just for a single term or single number। Then what we have to do, let's see। Actually guys ये बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इसमें कोई अप्लाई होता है इन वाला फॉर्मूला। we can apply guys no problem, but that simple thing I'm going to tell you, you have to do one thing 5 into 20 7 into 20। चलो भाई कुछ भी हमें नहीं आता, बस ऐसे ही सीख रहे हैं, कोई हमें गलत नहीं करेगा। देखो 100 लिखते जाओ तुम, इसका कोई अंत नहीं है। तुम 5 into 20 कर दिया, इसे 7 into 20 कर दो। देखो अब 100 से 140 के बीच में कितना सारा है बताओ तुम्हें, 100 and 150 के बीच में 101 102 कुछ भी तुम लिख दो, अगर कोई नहीं गलती करेगा। बस इतना याद रखना कि ऐसे वाले टर्म्स में एक हमारा कंफ्यूजन क्या आता है ना, देखो एक मिनट वेट करोगा, इसमें बताता हूँ कि ऐसा अगर हमें नंबर आता है तो एक हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि जब भी ऐसे करो तुम तो जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से इसे डिवाइड कर दो, ठीक है 7 into 20। तो ये हमारा कट के वही आ जाता है वैल्यू, तो इसे हम लोग फाइनल वैसे लिख देते हैं 20। तो हमारा वही हो गया 100 upon 1 upon 20, 100 upon 2 upon 20, लाइक दैट यू कैन डू गाइस नो प्रॉब्लम। तो एक चीज और हमें मैटर करता है कि ये वाला जो मेथड मैंने बताया इसके थ्रू आप लोग फ्रैक्शन के भी बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर बात करें फॉर्मूला का, तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला दैट वी कैन अप्लाई इफ वी फॉरगॉट दिस ट्रिक। So guys leave it, there is no any certain formula or there is even a certain formula that also should not be remembered for class 9 student, because until you will not try to learn something, you should not depend on formula only, because you have to try something by yourself guys, I told you already। So the next thing arises how we can solve the division theorem or division lemma। Actually when you will go in class 10, there you have to study about Euclid division lemma। Euclid division lemma is totally based on the concept that you will study in class 9 guys। Actually let me tell you one thing is that suppose we know that which are the terms regarded to any division process। Suppose we are dividing 575 by 5, so let's divide this term गाइस। ये बहुत सिंपल होता है हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत मिस्टेक काफी लोग करते हैं, मैं नहीं करता, बताता हूँ। एक्चुअली दिस टर्म इज नोन एज व्हाट, दिस टर्म इज नोन एज व्हाट, हियर व्हाट वी विल गेट एंड एट लास्ट व्हाट वी विल गेट। एक्चुअली गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। हमेशा याद रखना डिवाइजर,
this term is known as divisor. This is our dividend. This is our quotient and this is our remainder. You should always remember this term because when you will go in class 10, you have to prove by Euclid division lemma is that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Just I am telling you for certain basic things or certain extraordinary students, you have to remember this concept only. That is what our class 9. So guys, this much only we have to study. Now next concept that we are going to prove, how we can prove that root 5 or root 3 is a irrational or rational number by the method of contradiction. This is what in your topic. So guys, before we are going to represent or we are going to prove any number by the method of contradiction, before that we have to study one more concept, which is how we can represent any impure or mixed recurring on in the form of pure recurring. Actually, do you know what is recurring? Recurring or bar is different. Actually, most of the students get confused because bar is also having the same sign as that recurring has. But in case of bar, do you know what we did over there? When we were studying board mass in our basic classes, we saw the bar. But there we know that so many multiple expressions, or either it can be addition expressions, so many expressions are required when we have to put bar on any board mass or any given question. But in case of simple number, when you are seeing this type of sign, then you have to consider it as a recurring. Actually, recurring means that, suppose how we can tell or how we can write this number, given number 5.7696969 means that they are being repeated. They are moving like that only. So in order to present it, we are following a very, very simple trick, which is very, very easy. Now how we can represent it? Actually, here we can follow two steps. There is one another trick, but in order to apply any trick, we should know certain basic things that we can use for applying trick. Actually guys, जब भी ऐसा नहीं तो ये अभी आपको क्या दिख रहा है, देखो, this is our mixed recurring. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेकरिंग टर्म बोलते हैं. मिक्स्ड रेकरिंग टर्म का मतलब क्या होता है कि एक नंबर तो हमारा प्योर में है, ये 5 हमारा प्योर में है, लेकिन 7 के बाद 6 9 जो हमारा वो रेकरिंग में भी है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेकरिंग टर्म. अब देखो कई बार ऐसा रहता है, देखो हम लोग का ऐसा रहेगा 0.75 सुपर रेकरिंग. अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर रेकरिंग बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर का मिक्स है. अगर एक है तो बस 0.7575 के ऊपर हमारा रेकरिंग लगा हुआ. तो चलो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सीखते हैं. So in order to represent this, first we are going to use the long term method which we have to see. So how we can represent? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उससे हमेशा LHS में आप पॉइंट के इस साइड लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश करना. So how we can write it? First we have to take let 5.769 as x. Now by multiplying it with, अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना है? हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए देखना कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जो जिस पर रेकरिंग नहीं है उससे हमारा पॉइंट किस साइड है. तो इतना हमें पता होगा कि यहाँ से 5.769 के साथ हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 57.69 आएगा कि नहीं? तो अब हम क्या कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, तो हमारा LHS और RHS दोनों सेम हो जाएगा. तो 10x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 557.69 पर रेकरिंग. अब चलो नाउ वी कैन राइट अकॉर्डिंग. नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे लिखना है? नाउ इन नेक्स्ट स्टेप और फर्दर वी कैन डू देन. अब हमें क्या करना है? एक चीज देखो, हम लोगों ने x माना, हम लोगों ने x इज इक्वल टू क्या माना? 5.769. अब हमें इसे क्या करना है कि इससे लिख लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या करना है? इक्वेशन सेकंड कर देना. नाउ वी हैव टू फॉलो वन स्टेप. हमारा x ऊपर था तो इसे हम अब नहीं लिखते हैं क्योंकि x हम पहले ऊपर लिख चुके थे. तो हमारा अब हमें क्या लिखना है? नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, हमेशा सब्ट्रैक्ट करना. क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर से x का एक वैल्यू को हटाना पड़ता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. हम सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं? कैन बी ऐड ओवर हियर. तो देखो अगर ऐड करोगे ना तो एक से हमारा 11x आ जाएगा. 11x के साथ अगर उससे जाओगे तो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है. अब देखो इससे हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो हमारा इजी हो जाता है, मेथड हमारा इजी वे में सॉल्यूशन आ जाता है. देखो नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो अब हम लोग ऐसे लिखने का हम लोग क्या करेंगे? 10x माइनस x इज इक्वल टू 57.69 माइनस 5.769. अब हम लोग जस्ट इसे फॉलो करते हैं तो हमारा 9x इज इक्वल टू क्या होगा? देखो अब इसे जस्ट सिंपली इसे हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 57 में से 5 गया कितना? फटाफट बोल दो. 52. अब 52 के बाद कुछ भी आ जाए. देखो अब 690 है या हमारा 769 है, तो इसे हम लोग जस्ट लाइक वैसे लिख देंगे
अब इसे हम लोग हटाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, देखो इसे अभी हटाओ तुम, समझने के लिए वहीं पर आने दो। 690 हमारा 769, जो भी आएगा तुम्हें यहाँ पर से फटाफट ऐसे ऐसे डैश करके लिख देना। अभी मैं आपको उतना क्लैरिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक ट्रिक बताना है, एक मेथड बताना है कि जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये स्टेप आपको खुद करना है। एंड एक्स इक्वल टू फाइनली हमारा 9 से डिवाइजर में हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो हो गया डिनोमिनेटर में एक्स आ गया, एंड फाइनली हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया इसे m/n के फॉर्म में। तो एक चीज और हमारा बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है गाइस कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखो मैं वो बता देता हूँ। So guys, now we are going to see the shortcut trick to represent any decimal number in the form of m/n और p/q। तो चलो गाइस इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस फटाफट से बन गया। क्या करना है, 18 + 48/99, कुछ भी रहे ना भाई तुम ऐसे अप्लाई कर दो, बस उसका जो वहाँ पे रेकरिंग रहेगा वहाँ पे अपॉन में 99 से डिवाइड कर देना। अब चलो ये हमारा क्या बन गया, एडिशन बन गया फ्रैक्शन का। तो फटाफट से इसे ऐसे करके यहाँ पर 18 × 99 + 48 थिंग यू हैव टू फॉलो, ये हमारा आंसर हो गया। फटाफट से ये हमारा आंसर आ जाएगा गाइस, और यही होता है हमारा एक्चुअल ट्रिक। नाउ द ओनली कंसेप्ट व्हिच इज लेफ्ट फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स दैट हाउ वी कैन प्रूव एनी नंबर बाय द मेथड ऑफ contradiction whether it is rational or irrational. So now we are going to see about that guys. I am working this much for you all, so at least 1 like is required. And if you are new to our channel till now, if you had not subscribed the channel, go and subscribe this channel and even join the Telegram also, because there I give you so many questions regarding to every concept. So guys, finally we came in the last point of this video, or we can say this is going to be the intermission or the last theme of this video. So we are going to prove √3 as an irrational by the method of contradiction. So no need of mentioning it. First we will see how we can prove. Suppose what is mean by contradiction. Contradiction. What do you know about contradiction? Contradiction का मतलब क्या होता है ना, one thing will go up and one thing will go high, go down. Means that कि totally opposite guys. हम लोग किसी को अगर तुलना करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू कैसे करते हैं। अगर हम लोग दो स्टूडेंट्स के बीच में तुलना करना है, वी हैव टू कंपेयर टू स्टूडेंट्स। सपोज आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ माई वन फ्रेंड। सो बट हाउ कैन वी कंपेयर, वी कैन टेल माई फ्रेंड इज शॉर्टर देन मी, और आई कैन टेल आई एम लॉन्गर देन माई फ्रेंड। सो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब एक को बड़ा एक को छोटा दिखाया मैंने, वैसा ही प्रोसेस है। एक को सही और एक को गलत करके हमें प्रूव करना पड़ता है कि सही कौन है। अगर तुम गलत हो तो मैं तो सही हूँ। If you are wrong, then I am right. If I am right, then if I am wrong, then you are right. Okay, guys. So we are going to prove, or we are going to show that √3 is an irrational by the method of contradiction. So first we have to do these all things are required, because this is a question of 5 marks, or even in 3 marks also this it comes. So you need to remember is that we have to follow all the things that I will write on the board. So first we have to do, let √3 be a rational number. Then you have to write here by after giving comma, hence √3 is equal to p/q, because we know that p/q is the basic form of rational number. So we have to write like that, p/q is equal to √3. Then you have to let it as equation first, or you can't even leave it, I will tell you later. So here then you have to write in next process, then by squaring on both sides, what we will get here, p² equal to 3. Now we can write here by cross multiplication, p² equal to √3q². Hence from here we have confirmed that, then you have to write, hence we are confirmed that p, here let me write q is, or we can write here 3 is the multiple of q, hence q can be a factor of 3, like that only we can also write q can be a factor of 3. अब चलो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया कि p² equal to 3q², एक रिलेशनशिप हमें पता चल गया। तो हमें पता चल गया कि 3q का मल्टीपल है, तो फाइनली ये हमारा डिवाइजर भी होगा, यानी ये फैक्टर है। 3q² इज द फैक्टर ऑफ 3। तो भाई इतना तो पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। अब जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन में एक ही चीज हमेशा होती है कि एक चीज हमें पता चल जाती है। एक चीज जब भी हमें पता चल जाती है तो हमेशा याद ये रखना कि हमें यहाँ पर से देखो हमें क्या पता लगा, p² equal to 3q², तो हम लोग बोल दिए यहाँ पर से 3 के साथ ये मल्टीपल है, तो p का ये फैक्टर है या मल्टीपल है, जो तुम बोलो सभी सही हो जाता है। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर हमें क्या करना था, सेकेंड स्टेप में कॉन्ट्राडिक्शन में
इससे अगर हमें रॉन्ग प्रूव करना है तो यहाँ पर से पावर को हटा देते हैं, हटाने के बाद एक चीज और ऐड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एडिशनल कोर्स यहाँ पर एडिशनल वर्क करते हैं, वो क्या है देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर से हमें क्या पता चल जाता है कि P इज इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 3Q²। तो अब हमें एक चीज मानना है कि अपने मन से हमें एक थ्योरी को यहाँ पर से ऐड कर देना। आप देखो थ्योरी क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, मैंने पहले बोला कि यहाँ पर से P का एक 3 मल्टीपल हो गया और ये इसका एक फैक्टर हो गया 3Q²। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस, मैंने लिखा है P 3 is the multiple of P, so let P is equal to 3Q। अब देखो 3Q को टर्म को अब हमें यहाँ से चेंज करना था। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि अगर एक ही टर्म के ऊपर जाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू 3Z, कुछ भी मानो, तो P² इक्वल टू 9Z²। नो हेंस यहाँ पर से अब आपको क्या करना है कि P² इक्वल टू क्या हो गया 9Z²। अब देखो एक चीज याद रखो कि हमारा P² इक्वल टू 9Z² आया, P इज इक्वल टू पहले हमारा क्या आया 3M आया या हमारा 3Q आया या कुछ भी आया, हमारा ऊपर क्या है देखो P इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे क्या लाया P² इक्वल टू 3Q², तो P इक्वल टू हमारा 3Z हम लोग लाए। तो ये कैसा पॉसिबल है, तुम ही बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P का भी वो मल्टीपल हो जाएगा और Q का भी मल्टीपल हो जाएगा, Z का भी मल्टीपल होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों के फॉर्म में वो कॉमन फैक्टर P और Q के बीच में बन जाए और दोनों RHS वाले जैसे क्लियर नहीं हो पाए। देखो ये क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। चलो वैसे कहा क्या रहा है ये मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। यहाँ पर से हमें एक चीज मिल जाता है, सपोज यहाँ पर से मैंने क्या लाया, हम लोग को पता चलेगा कि P² इक्वल टू 3Q²। मैं समझा रहा हूँ बढ़िया से देखना आप लोग ध्यान से। तो हमें पता चलेगा P इक्वल टू हमारा हम लोगों ने क्या मान लिया, यहाँ पर से 3Z मान लिया। तो अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा 9Z² आ गया। अब हम लोग यहाँ पर से देखिए P का एक मल्टीपल 3 है और Z का या Q का हमारा एक और मल्टीपल भी 3 है। तो ऐसा पॉसिबल है कि P और Q एक ही साथ दोनों एक कॉमन फैक्टर के रूप में वर्क करें? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में आता है, P/Q इज नॉट हैविंग एनी मोर कॉमन फैक्टर, तभी तो हम लोग वो रेशनल कहलाते हैं। तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू गलत हो गया, यानी हमारा मानना गलत है, क्योंकि √3 इज नॉट एन रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर गाइस। तो यही तो था हमारा वो मैकेनिज्म जिसमें इतना प्रोसेस लगा और फाइनली हमने प्रूव कर दिया। अब कोई भी टर्म आए उसे फटाफट सोल्व कर दो। चलो हमें प्रूव करना 5 × √3। अब एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट का यह कंफ्यूज आता है, द एडिशन ऑफ वन रेशनल नंबर विद अनदर रेशनल नंबर गिव व्हाट। चलो ये मैं सोल्व करता हूँ। एक्चुअली वेट गाइस वेट, क्योंकि ये टर्म्स ट्रू फॉल्स में आते हैं, ये टर्म्स हमारे दिमाग को थोड़ा सा हमें जोर देने को मजबूर करते हैं, लेकिन दैट वी हैव टू डू गाइस फॉर गेटिंग कंफर्मेशन। So guys, here we can see, suppose we are told √3 plus 2, which is we will get rational or irrational। ये मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कई बार ऐसा होता है अगर आप डायरेक्ट जाएंगे ना रेशनल प्लस इरेशनल मीन्स व्हाट, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं तुम कह सकते हो। अगर यहाँ पे तुम अभी रेशनल लिख दोगे तो अभी तुम अभी रेशनल पे आ जाओगे। देखो √3 - √3 क्या हुआ बताओ, इसे हम लोग प्लस के अंदर माइनस लेते हैं, बताओ 0 आया जो हमारा रेशनल है। तो ये हमेशा कंडीशनल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाला भी कंडीशनल होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है √3 × √3 बताओ क्या होगा, √3 × √3 भाई ये भी कंडीशनल है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम, √3 × √3 लेकिन इरेशनल, लेकिन अगर √2 × √2 करो बताओ क्या आया, 2 इरेशनल नहीं रेशनल आया। तो ये भी बेस्ड ऑन द कंडीशन, बट द लास्ट कंसेप्ट अगर हमारा 2√2/√2 2 अगर हमारा रह गया 3√3/√2 बताओ, अगर ऐसा टर्म आता है तो यहाँ पर हमें एक प्रोसेस फॉलो करना रहता है, जो कि होता है हमारा एक प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, जो कि क्लास 9 में हम लोग मेजर स्टूडेंट्स करते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक चीज और हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर में जब भी आपको इरेशनल नंबर दिखे या जब भी ऐसा स्क्वायर रूट वाला नंबर दिखे तो आपको हमेशा इसे ऊपर ले जाना रहता है, √2 और √2। और यह एक मेथड एक मैकेनिज्म कहलाता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है ये मैं इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। देखो गाइस मैंने आपको सिखा दिया कि अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर का वैल्यू दिखे या रूट का वैल्यू दिखे तो हमेशा उसे रेशनलाइज कर लेना। अब रेशनलाइज हमेशा कई बार तो ऐसा होता है बहुत बड़ा बड़ा रेशनलाइज आ जाता है, इतना बड़ा कि आप सोच नहीं सकते। लेट मी टेल यू समथिंग, सपोज 1/4 × √2 or we can directly write here √6, we are given this one, how we can rationalize it? Very simple process, the same thing we have to follow, 4√6/4√6 we have to multiply just, so we will get here 4√6 और ये हमारा जितना हो जाएगा स्क्वायर करके लिख दो और ये हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि साइन हमेशा डिफरेंट होता है। अगर हमारा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था, आई टोल्ड यू हियर √3/+√2 and here we are having √3 - √2, then what we have to do, यहाँ पे साइन हमेशा चेंज कर देना √3 - √2 और यही साइन √3 -
√2, ठीक है, हमेशा याद रखना कि साइन चेंज होता है। तो गाइस दिस इज व्हाट ऑल अबाउट चैप्टर 1। हाउ इज दिस पार्टिकुलर वीडियो? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। इफ यू आर हैविंग एनी मोर डाउट टिल नाउ, go and ask what is wrong with me. No, you can ask anything which you have. एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब आया था आप लोग से। I hope you all are enjoying that particular question because that question was so funny guys. एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि why do we study? स्टडी का जरूरत क्या है? तुम बताओ, you only tell me what is the essentiality of being of study? Why we study guys? Because study is equal to fun. हाँ, study equal to fun, लेकिन study equal to seriousness also. Study gives us boldness, study gives us confidence, but study do not give us overconfidence, because whenever you will get more education, you might have seen one student who was very wait guys, wait, yeah, even I am telling my personal experience. I saw one student who was so funny, so lethargic, so comedian in class 6, but when he reached in class 10, oh my god, you can't judge whether he is only that guy who was making so many fun in class 6. The reason is that until you will not learn anything, no, you will not get boldness, because एक कहावत हिंदी में अजगल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप्पे जाए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जिसके पास एजुकेशन आती है, कॉन्फिडेंस आता है, तो वो साइलेंट रहना सीखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमें जो पता है उसे नहीं पता है, तो हम लोग क्यों उससे लड़े? क्योंकि ये दिस इज द वर्ल्ड ऑफ competition, this is our competitive world. Here we have to prove our education, not we have to fight and prove. हमें अपने रिटन में प्रूव करना था, ना कि हमें बोल कर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हमें पढ़ते क्यों। ठीक है गाइस, थैंक यू। दीपक कुमार ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बता दिया कि हमेशा आई ऑलवेज टेल यू द नेम्स हु ऑल आर आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज आई ट्राई टू प्रमोट देम, आस्क मोर क्वेश्चन, गेट मोर रिप्लाई फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे टू यू, मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।